Shri Kumarswami, good evening, one and all. Shri Kumarswami Mahavidyalaya Ausa is organized World Record Series 2. Today is the 102nd day of the World Record Series 2, and the keynote speaker is with us, Dr. Supriya Singh Gupta Madam. So first of all, I welcome to Gupta Madam for the dais. I welcome to Honorable Principal Dr. M. Bedkar sir. Some of the colleagues from my college, IQAC coordinator Dr. Sanjay Kale sir, Dr. K. N. Kadam sir, Dr. Sudhir Garar sir, Dr. Anita Dole madam, and Praveen Utke sir. I welcome to you. And lastly, I warmly welcome to all the dear participants. So today's topic for the presentation is extent of aluminum involvement in our lives and its impact. Now this topic is going to present Honorable Dr. Supriya Singh Gupta Madam. Before her presentation, in short, I would like to introduce today's keynote speaker, Dr. Supriya Singh Gupta Madam. She is an associate professor from HPT Arts and RYK Science College, Nasik. So with these short introductions, now I request the keynote speaker, Dr. Supriya Madam. Please start your presentation. Thank you, Madam, and welcome. Yes, Madam, you are welcome. Thank you. Yes, sir. Thank you. Ma'am, you are not audible. Just a minute, sir. Sir, am I not audible? Audible, madam. You are audible. I think the problem is with him only. Sir, am I audible? Yes, you are audible. You are audible, madam. Please continue. You are audible, madam. Okay. Shall I start? Yes. Okay, sir. Okay, sir. Yes, Madam. Sir, is my We are screen getting. visible? Yes, please continue. Good evening, everyone. Myself, Dr. Supriya Singh Gupta, and my today's topic is aluminium involvement in our lives and its impact on human health. Aluminium is one of the most abundant metal in the Earth's crust, and it is omnipresent. Despite of being a non-essential metal, aluminium has become an integral part of our system. Let's see what are the sources from which we are getting this non-essential element in our body. So the sources are like aluminium-based utensil in our kitchen, soda cane, which are supposed to be cool over the bottles, are actually not, as the acidic drinks in it facilitates the aluminium leaching in the drinks. Second is another common object, aluminium foil. Aluminium foil is used to wrap the hot food and for for barbecuing. Now for this, again the heating is a component which facilitates the leaching of aluminium into the food components. Now the next is the preserved food. Preserved food also has aluminium in it to increase their shelf lives. Now the next are the drinking water. So the drinking water naturally has aluminium in it, which is further fortified by the treatment of water.
So the people are using aluminium compounds for as a coagulant for the water treatment, which adds more of aluminium into the water, which actually comes in our homes. So that, and the next is the vaccines. Vaccines like DPT, hepatitis, and even the COVID-19 vaccine. They use aluminium compound as adjuvant, which increases the efficiency of these vaccines. Another component are the antacids. Now, these antacids are very common. They are available in market even without prescription. And it has been known that these majority of these antacids, they contain aluminium hydroxide as the antacid component. So these antacid components, the long-term usage of this is has been associated with the osteomalacia. Osteomalacia is the softening of bones. Another thing are the antiperspirants. Now, these antiperspirants, the active ingredient in these is the aluminium chlorohydrate, which blocks the sweat glands. Now, being soluble, they are easily absorbed into the skin and they can change the estrogen receptor in the breast tissue and causes the medical issues later. Now, the next big sector is the cosmetics and skincare. Now, these compounds like lipsticks, creams, lotion, shampoo, eyeliner, mascaras, they do have aluminium compounds in them. And the reason for that is that aluminium, they are good emulsifiers. They are used as a thickening agents. They absorb greasiness and they have anti-caking effect. But nothing can beat an aluminium welder. The aluminium welder is the person who is at the highest risk of the aluminium exposure. Now let's find out what happens when aluminium gets into our body from these sources. How does our body deals with the aluminium? Majority of the aluminium has been reported to be eliminated via kidney in the form of urine and some via gastrointestinal tract in the form of feces. Then what is the trouble? The trouble is actually with the people with the renal dysfunction and gastrointestinal tract trouble. They are unable to eliminate this efficiently and shows the accumulation of it, which finally is manifested in the form of aluminium toxicity. Or the another option is when the aluminium load is high. So what is meant by the high aluminium load? When we consider each source independently for a day, then the amount of aluminium which we acquire from these components or these factors is negligible. But when we see the cumulative effect of all these for a longer period of time, then surely we are accumulating the aluminium in our system. Now, the threshold for the adverse effect has a value of 4 to 6 picomole per liter in urine and of 0.25 to 0.35 kilomole per liter in serum, which is seen in the aluminium welders. Now, let's see the aluminium distribution in body. Aluminium is distributed unequally to all the tissues in humans, with approximately 50% in the skeleton. Skeleton means bones we are talking about here, and 25% in lungs from the accumulation of inhaled insoluble aluminium compounds. Most of the aluminium in parts of body other than the lung is thought to originate from the food intake. Reported normal levels in human tissues are 5 to 10 milligram per kg in bone, around 20 milligrams per kg wet weight in lungs, 0.25 to 0.75 kg wet weight in brain, and 1 to 2 microgram per liter in plasma. Aluminium has also been found in skin, the lower gastrointestinal tract, lymph node, adrenal, parathyroid glands, and other soft tissues. That throws a light on the fact that despite of being the non-essential metal, what this aluminium is doing in our body and how we are acquiring this and what we can do to minimize it. Now, there is an evidence that with increasing age, aluminium concentration may increase in the human plasma, bone, and brain tissue. Aluminium can enter the brain through the blood-brain barrier and through the blood-cerebrospinal fluid barrier. Aluminium is also able to cross the placenta barrier, reaching the fetus. Now, the known harmful effects of aluminium are the breast cancer, anemia, osteomalacia,
and Alzheimer's. Now let's talk more about this aluminium toxicity. So the first thing is aluminium is a metalloestrogen, which is a risk factor for breast cancer, and it has been proved. Second is it is a competitive inhibitor of some crucial metal ions like mineral, like iron, magnesium, and calcium. So definitely the processes, the metabolic pathways which are associated with these metals or minerals, they will be hampered once the competitive inhibitor of these is present in our system. Hence, it is also associated with the osteomalacia, that is softening of the bone. And the reason for this softening is that aluminium actually replaces the phosphate present in the bone. So the bone is getting more and more loaded with the aluminium and leaching out the phosphate. So that causes the softening of the bones. Dialysis encephalopathy, it is a syndrome occurring in the dialysis patient and is linked to high aluminium levels in dialysis water. Dialysis, the principle of dialysis is based on the exchange of ions as per their concentration. So if the aluminium concentration is more in the dialysis water, then the body is going to take up that aluminium from that water. And we know that how the water has been fortified with the aluminium. And the third factor in this is the anemia, because it is a competitive inhibitor of iron. Aluminium is a competitive inhibitor, so it will not allow the iron to get associated with the hemoglobin. So hemoglobin is not going to function and will not transport the oxygen. Now the third is that aluminium toxicity induces oxidative stress. Oxidative stress means the presence of reactive oxygen species, that is ROS. Now, these species are highly reactive and they are capable of reacting with the macromolecules like DNA and proteins and can damage those. It also induces the peroxidation of lipids, which affects the functioning of lipids. ROS are actually responsible for aging effects, so it will also accelerate the aging. Now, these ROS would reduce the intestinal glutathione levels, leading to the reduced transcellular calcium absorption in the small intestine. So, irrespective of how much calcium you are taking in, whether you are having dairy products, whether you are having eggs, or even the tablets, irrespective of this level, the intestine, because intestine is not able to absorb the calcium, your body will be deficient in calcium, which is going to affect further like bones, teeth, and other metabolic pathways. Aluminium is a powerful neurotoxicant also. Considerable evidences exist that aluminium play a role in etiology and pathogenesis of Alzheimer's disease by inducing the oxidative stress which causes the death of neurons. Now let's talk more about this neurotoxicity. In addition to inducing oxidative stress and binding to the negatively charged membrane structure in neurons, aluminium is able to modify hippocampal calcium signal pathways. Those are crucial for the memory. So that is going to affect the memory. Cholinergic neurons are particularly susceptible to the aluminium neurotoxicity, which affect the synthesis of neurotransmitter, that is acetylcholine. So acetylcholine actually it transmits the signal from one neuron to another neuron, and in the absence of acetylcholine, the nerve signal will not be able to get transmitted across the neuron and will not be able to bring about the desirable action. So there will be a problem in the coordination. Now, particularly the later two neurobiological effects are also relevant within the presumed association between aluminium and Alzheimer's disease. Now, we have conducted a survey to evaluate the extent of aluminium involvement in our lives, because now we know that there are various sources from which we are acquiring this aluminium, and we also know that the aluminium toxicity can cause to various medical conditions. So the method of data collection was a question-based survey. Secondary data was collected using the research papers. Questionnaire included 3 sections. First was demographic details. Second was multiple choice answers, and the third was based on the Likert scale. 246 people were considered for the study.
Data analysis, the data was collected and analyzed using the statistical analysis software that is JAMOVI. Man-Whitney, U-Test and ANOVA one-way has been done for the comparative analysis, and the values less than 0.001 were only considered significant. Findings from the section 2 based on the frequency are 74.8% people use aluminium vessel for cooking purpose. So we could find that this is the only factor, that is the usage of aluminium vessel in the kitchen, which is common and prevalent, and majority of the people are using that in a very high number. Amongst this, 41.9% people uses the water boiled in aluminium vessel for drinking purposes, which further increases the amount of aluminium in water. Similarly, 24.3% people uses aluminium vessel for making tomato chutney, which is even of more concern, as cooking acidic food in the aluminium vessel facilitates the leaching of aluminium in the food. 42.3% people uses aluminium for cooking pulses, 68.4% people are using it for cooking vegetables, and 45.6% for cooking rice. Among 57.7% people use aluminium vessel to store the cooked food. This is again a matter of concern, as the time for which the food is stored in the container will also affect the leaching of aluminium directly. More is the time of storage, more aluminium is going to leach into the food. Now, the reason for prevalent usage of these aluminium vessel, we have found that 41.5% people prefer aluminium vessel because it is cheaper, 39.8% people prefer because it cooks fast, 41.1% people use it because it is easy to clean, and 41.5% people prefer because it is easily available. Now, we have also tried to correlate the area like rural and urban area and the usage of aluminium vessel. So we found that people from rural area tend to leave their cooking food for a longer time in aluminium vessel to be consumed later. These findings suggest that people of rural area are at higher exposure of aluminium, as longer the time of food storage, more is the aluminium leaching. The second factor that we have considered is the financial status of people. So we have found that people with lower income group are more exposed to the aluminium due to frequent usage of aluminium cooker and vessels. Furthermore, this group left the food in aluminium vessel for a longer time to be consumed later. Additionally, this group preferred aluminium vessel over the other metals and considered it to be safe as well. The third factor that we have considered is the educational background. People with low educational status used more aluminium cooker and other aluminium based cookwares. They also used these frequently for making basundi, which is an elaborated process of milk condensation involving hours of heating in aluminium vessel. So there are two prevalent factors. The first is heat, which is known to cause the leaching of aluminium, and the time. More the time are going to work here and will enhance the aluminium leaching into the basundi. Thus, the reason which we can conclude out of this seems to be simple ignorance. People are ignorant about the use of aluminium vessel, the leaching of aluminium, the toxicity of aluminium. Now, what could be the alternatives for that? So the alternatives we could suggest are the iron walk. Iron walk, instead of aluminium, it will leach the iron, which is a beneficial and an essential component of human body. We can use steel vessels. We can use glass vessel. The older the steel vessel, the less will be the leaching of other metals from that. Now, the alternative for aluminium foil, for this we can use papers. The papers has to be food grade papers, because other papers, if we use like the papers which are from the notebooks or A4 papers or newspapers, these papers are treated with the chemicals. So instead of this, now we will be loading our chapatis or our food with more of other metals or other chemicals instead of aluminium now. Or we can use the simple cloth.
Alternative to antacids. Now, instead of taking antacids which have aluminium hydroxide, we can take the antacids which have calcium carbonate in them. Now, shampoos, we know that shampoos, they have aluminium salts or aluminium compounds in them, but the dry shampoos have a very high level of aluminium compounds in there. So we should totally avoid dry shampoos. And conventional dry shampoo uses aluminium starch octenyl succinate as the source of aluminium. Now, the another reason that we should avoid these dry shampoos are that the scalp and the forehead shows the highest absorption rate for drugs and chemicals, approximately 4 times greater than the absorption rate than on your forearm. Using, and we know that cosmetics are using aluminium compounds as thickening agent to improve the stability and texture of cosmetics, like lotions and creams. They have anti-caking effect, they are emulsifiers, and many more reasons to use these. We should also avoid frozen or ready-to-eat food. Frozen food like cheese manufacturers use aluminium in the form of sodium aluminium phosphate to make cheese ultra smooth and uniform. Processed cheese is a top source of aluminium exposure, and when the same pizza is a frozen one, then they use even more amount of calcium. 140 times more aluminium is being used when it is a frozen version of these food products. So these aluminium content in these frozen compounds, they increases the shelf life of these frozen food products. Similarly, the dry soup mix has 5 times more aluminium content than ready to eat. The other things are like acidic sodium aluminium phosphate is also present in the preserved food. Now, due to the aluminium in the baking powder, some pancakes, waffles, frozen products, ready-to-eat pancakes are also laced with aluminium with around 180 milligram per serving. These preserved fast food get their aluminium shares from the preservatives, coloring agent, leavening agent, and anti-caking agents. So instead of having pasta, we can have rozza at home. Instead of having tacos, we can have these chila, and we can have cake without baking soda and baking powder. Now, alternatives to water treatment. As we know that aluminium compounds are being used as a coagulant for treating the water. Now, instead of that, we can use the moringa seed powder. Moringa seed powder is also going to do the same job. It is going to act as a coagulant, and it will also decolorize the water. Now, the conclusion, not specifically one, but cumulative effect of these sources could have the effect above the threshold level. Hence, we must manage the exposure. Therefore, few things which can immediately reduce the load of aluminium includes the aluminium vessels. Hence, it is advisable to minimize the usage of these vessels and just be vigilant about the product you use often for the aluminium load. Another thing to be avoided completely are the antiperspirant and dry shampoos because they are available in these soluble forms. So these soluble aluminium compounds can be easily absorbed by the skin and can cause aluminium toxicity. And the last is awareness must be spread. Thank you for your patience. Thank you, madam, for your wonderful presentation. Now I request the participants, please, if you have any query, please come ahead. Hello. Welcome, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good evening, Ambedkar sir, Prashant sir, and Dr. Supriya. A wonderful explanation about aluminium, and there is a specific role of aluminium also in the body. So, is there any kind of any kind of deficiency state can we identify? Because we are finding that iron deficiency, calcium deficiency are very commonly discussed. But the aluminium is a part of our body because it is a constituent also in the bone and other places. So if it is lacking, then
whether it will produce any kinds of signs and symptoms? Sir, aluminium is not an integral part of human body. We do not need aluminium. But still, it is a normal condition. They have defined that these are the normal levels of aluminium in our body because we are highly exposed to the aluminium. So it has become an integral part, but it is not performing any role apart from the toxicity. Okay, thank you, ma'am. Hello, thank you, ma'am, for the wonderful speech. I have one question. Actually, we are habituated using creams, lipsticks every day, day-to-day life. Is it possible to shift it to some Ayurvedic or homeopathic sort so that we can come across with? Yes, definitely. Because what I believe is that it is always better to use something natural, right? You can use, like Biotic is a very good company. They have really good products. It is an Ayurvedic company also and has a huge range of cosmetics, at least skincare products they have. You can use that. And I personally believe that the natural compounds, at least the people who are claiming that they are 100% natural, then maybe not 100%, at least 50%, 70% they will be having natural compounds. So we can take a chance there. Yeah, yes. Yes, ma'am. Very nice. We use so many products, I was not aware that they are so harmful. Especially antiperspirants are really harmful. One should not use antiperspirants. Okay. हो सके तो थोड़ा हिंदी में समराइज करो मैडम, एल्यूमिनियम क्या है, उसका बॉडी पे कैसे इफेक्ट होता है, अगर हो सके तो, क्योंकि बहुत सारी हिंदी भाषा है यहाँ। हाँ जी सर, मैं ऐसे ही बोलूं? हाँ, चलता ऐसे ही बोलो, विदाउट पीपीटी। हाँ जी, जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हमारी बॉडी का कंपोनेंट नहीं है। मतलब इट इज नॉट लाइक आयरन, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम। ये जो बाकी सारे हैं, इनका हमारी बॉडी में कोई ना कोई रोल है डेफिनेटली, पर एल्यूमिनियम का कोई रोल नहीं है हमारी बॉडी में। बट आपने देखा होगा, एक मेरी स्लाइड थी जिसमें लिखा हुआ था इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी कि एल्यूमिनियम कंटेंट इतना है, बोन्स में इतना है, ब्रेन में इतना है, प्लाज्मा में इतना है। तो इसका रीजन हमने बताया कि we are surrounded with the things which are having aluminium in one or the another form. तो वो अलग अलग चीजें क्या हो सकती है, वो हमारी किचन में जो यूटेंसिल्स हैं एल्यूमिनियम के, वो हैं जिसमें कि जब हम खाना बनाते हैं तो हीट प्रोवाइड करते हैं हम, और टाइम। तो हीट एंड टाइम दोनों ही चीजें एल्यूमिनियम की लीचिंग, यानी एल्यूमिनियम आपके वेसल से निकल के आपके फूड में आता है हीट की वजह से और टाइम की वजह से। जितना लंबा टाइम आप उसको उसमें कुक करेंगे या स्टोर करेंगे, उतना ज्यादा एल्यूमिनियम आएगा, राइट? और जितना ज्यादा हम उसमें खट्टी चीजें रखेंगे, कोई भी एसिडिक चीजें रखेंगे, दैट विल ऑल्सो इंक्रीज द लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम। उससे भी ज्यादा से ज्यादा एल्यूमिनियम हमारे फूड में आएगा। तो एक वो रीजन है, एल्यूमिनियम हमारे बॉडी का एक इंटीग्रल पार्ट बनता जा रहा है, विच इज नॉट सपोज टू बी। और दूसरा रीजन था कि जो केन्ड फूड आ रहे हैं उनमें भी एल्यूमिनियम केन्स यूज होते हैं, उससे भी लीच होके आता है। और बाकी एल्यूमिनियम फॉइल हम यूज करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं, ग्रिलिंग के लिए यूज करते हैं, गरम गरम खाना उसमें पैक करते हैं, उससे एल्यूमिनियम लीच हो रहा है, हमारे फूड में आ रहा है। अलग अलग एंटासिड्स हैं, एंटासिड्स बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के इजीली अवेलेबल होते हैं और हम भी आराम से लेते हैं एंटासिड, राइट? और ऐसी स्टडी एक नोन है कि जिसमें 8 साल तक एक कोई पर्सन है हु वाज रेगुलर विद दिस एंटासिड, और उसमें उस स्टडी में उन्होंने कोरिलेट करा इस एंटासिड को विद ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया एक डिजीज है जिसमें बोन्स सॉफ्ट हो जाती है अपनी। बोन्स सॉफ्ट क्यों हो रही है अपनी? क्योंकि बोन्स में से फॉस्फेट निकल रहा है और एल्यूमिनियम बोन में जा रहा है, राइट? एल्यूमिनियम हैज नो रोल टू प्ले इन बोन, उसका कोई रोल नहीं है बोन में, तो वो सिर्फ उसको रिप्लेस कर रहा है, एक्यूमुलेट होने की एक साइट है उसकी, लेकिन बोन को कोई एडवांटेज नहीं हो रहा उससे। तो बोन सॉफ्ट हो गई है और फॉस्फेट बोन से निकल गया है हमारा। आयरन का इशू है, आयरन को वो इनहिबिट करता है, तो इसलिए अनीमिया हो रहा है लोगों को, राइट?
और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे हमने बताया कि कॉस्मेटिक्स हैं, इसमें एंटीपर्स्पिरेंट्स हैं, इसमें वैक्सीन्स हैं, जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसमें भी एल्यूमिनियम है। ऑल्दो वैक्सीन्स का जो इशू है दैट इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ वैक्सीन एंड वेरी ओकेजनल यूज इज देयर, राइट। तो इसीलिए वैक्सीन को हम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट स्टिल सोर्स बताने के लिए एक सोर्स हमने वो भी बताया कि वैक्सीन से भी आ सकता है एल्यूमिनियम, और जो बाकी कॉस्मेटिक्स हैं इन सब से एल्यूमिनियम हमको मिल रहा है। इश्यूज क्या हो रहे हैं एल्यूमिनियम से, विच आर नोन? अनीमिया, क्योंकि आयरन नहीं मिल रहा है हमको, आयरन को इनिबिट कर रहा है वो। और दूसरा है ब्रेस्ट कैंसर। हमने बोला कि जो एंटीपर्स्पिरेंट की तरह यूज किया जाता है, तो जो एंटीपर्स्पिरेंट है वो एस्ट्रोजन की तरह काम करता है और ब्रेस्ट के टिश्यूज को चेंज करता है, अल्टर करता है, विच फाइनली लीड्स टू ब्रेस्ट कैंसर। तो एक ये है इसका। दूसरा है ऑस्टियोमलेशिया, दैट इज अगेन द सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स, राइट। तो ये सारे रीजन, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं एल्यूमिनियम के, एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी। और लास्ट इज एल्जाइमर्स, क्योंकि न्यूरोटॉक्सिसिटी भी कॉज करता है एल्यूमिनियम। पर हमारी बॉडी एल्यूमिनियम निकाल सकती है, किडनी और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है यानी फीकल मैटर के थ्रू एल्यूमिनियम हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो फिर इशू क्यों आ रहा है? फिर इतने सारे सोर्सेस का मतलब ही नहीं है अगर हमारी बॉडी उसको डील कर सकती है तो इसमें इशू आता है स्पेशली पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम द रीनल डिसऑर्डर, जिनके किडनी के कोई इश्यूज हैं या उनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कोई इश्यूज हैं। तो ऐसे लोग एल्यूमिनियम को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। प्रोसेस मीन्स दे विल नॉट बी एबल टू एलिमिनेट इट। तो एल्यूमिनियम उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहेगा। या फिर इसका हम दूसरा रीजन दे रहे हैं कि कैसे हो सकती है एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी, कि किडनी सही है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी सही है, लेकिन जो एल्यूमिनियम हम एक्वायर कर रहे हैं डेली का एक्सपोजर है, दैट एक्सपोजर इज वेरी हाई, वो बहुत हाई है वो, लेकिन एक कंपोनेंट का हाई नहीं है। अगर आप सिर्फ बोलोगे किचन यूटेंसिल्स का हाई है, नहीं, या सिर्फ आपको क्रीम से मिल रहा है सारा एल्यूमिनियम, तो नहीं, एंटासिड से मिल रहा है तो नहीं, वैक्सीन से मिल रहा है तो नहीं। बट इन सब का अगर क्यूमुलेटिव इफेक्ट हम लेते हैं तो इट मे इंक्रीज द एल्यूमिनियम लोड इन योर सिस्टम। लोड अगर बढ़ जाएगा तो बॉडी उसको इतना एलिमिनेट नहीं कर पाएगी, तब एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी जनरेट हो सकती है। तो उसके लिए हम फिर ऑल्टरनेटिव्स अलग अलग सजेस्ट कर रहे हैं, जैसे जो किचन के यूटेंसिल्स हैं आप उनको इजीली रिप्लेस कर सकते हो। लाइक इन माय किचन आई डू नॉट हैव अ सिंगल वेसल ऑफ एल्यूमिनियम, कोई भी नहीं, ठीक है। आई एम यूजिंग स्टील। स्टील के साथ भी इशू है, स्टील जब नया होता है तो वो क्रोमियम और निकल लीच करता है पर कुछ टाइम के लिए, तो आप उसमें वाटर बॉईल करके थोड़ा टाइम ऐसे उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, देन यू कैन यूज इट। तो जितने पुराने स्टील के बर्तन हैं उतने ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि अब उनमें कुछ भी लीच नहीं होगा, राइट। वी कैन यूज दोस, वी कैन यूज आयरन वेसल्स, जिनसे हमको लीच होगा तो आयरन लीच होगा। तो पुराने जमाने में आयरन के वेसल्स यूज ही किए जाते थे, तो आयरन उसमें से आएगा, तो इट इज गोइंग टू सपोर्ट अस। एनीमिक कंडीशन वैसे भी आजकल बहुत प्रिविलेंट है, बहुत सारे बच्चे एनीमिक हैं, बहुत सारे बड़े एनीमिक हैं, हीमोग्लोबिन लेवल सबका बहुत कम है, तो आयरन वेसल्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी हेल्पफुल। और ग्लास यूज कर सकते हैं। इवन द क्ले वेसल्स आर वेरी पॉपुलर दीज डेज। क्ले के तवे भी आते हैं, मिट्टी के तवा आता है, बॉटल आती है, इवन कुकर जैसा, कुकर नहीं है एग्जैक्टली पर कुकर जैसा कंसेप्ट है उसमें। आई हैव यूज्ड दोज ऑल्सो, तो वो यूज किए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल हम रिप्लेस कर सकते हैं। जो पेपर होता है फूड ग्रेड पेपर लेना पड़ेगा, पर उसके लिए फूड ग्रेड पेपर हमको चाहिए, क्योंकि अगर बाकी कोई पेपर यूज करते हैं तो वो केमिकली ट्रीटेड होते हैं, तो वो आपके फूड में और ज्यादा केमिकल्स इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो वो पेपर्स नहीं यूज कर सकते हम। फूड ग्रेड पेपर या फिर क्लॉथ यूज कर सकते हैं। एंटासिड में हमें देख के लेना चाहिए कि कौन सा एंटासिड ले रहे हैं, इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है या फिर इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, तो विल प्रेफर द वन विच इज हैविंग द कैल्शियम कार्बोनेट इन इट। ऐसी कॉस्मेटिक्स है, तो कॉस्मेटिक्स हम ड्राई शैम्पू यूज करते हैं आजकल बहुत लोग, स्पेशली यंगस्टर्स, तो ड्राई शैम्पू नहीं यूज करना चाहिए। पेट्स के लिए भी ड्राई शैम्पूज आते हैं, पेट्स को मिलाना इज अगेन अ बिग टास्क, तो लोग ड्राई शैम्पू बहुत यूज करते हैं। ड्राई शैम्पू में भी एल्यूमिनियम कंटेंट बहुत हाई होता है, तो हम ड्राई शैम्पू अवॉइड कर सकते हैं, शैम्पूज यूज कर सकते हैं। और फॉर कॉस्मेटिक्स आई वुड से कि हम कोशिश कर सकते हैं कि जितनी हर्बल कंपनीज हैं उनको ट्राई करें हम, जितनी रिनाउंड हर्बल कंपनीज हैं उनमें बिल्कुल नहीं होगा ऐसा नहीं बोल सकती मैं, लेकिन हाँ कम होगा
दैट विल बी द एश्योरेंस कि कम होगा उसमें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हम वी कैन थिंक ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, हम सोच सकते हैं ऑल्टरनेटिव्स और रिप्लेस कर सकते हैं एल्यूमिनियम को। Okay. Thank you, madam. Thank you, sir. Now I request to honorable principal sir. Please come and have some concluding words for us. Please, sir. Thank you, Prashant sir. And today's resource person, Dr. Supriya Singh Gupta madam, who is from Nasik. The third time she is appearing here. First of all, I think I am remembering that tortoise day. The second was the last year new topic, and today is the aluminum topic. So today I am knowing that aluminum is nothing used for us. This is the fact I have known today. Aluminum is nothing used to the body, and it is entering in the body in various types of which we using in the kitchen or all our daily elements. So to avoid these things, you have also given alternative to that. Also, you did studied in the Nasik. I think that was a case study where you get the result from how they are using, how much, why they are preparing the aluminum. So it's better that we avoid to use aluminum where it is essential. It is used. So this message should go to everyone, so that for the better health we should avoid aluminum. And from today we also try to avoid this type of cooking elements what we can, I think. So thank you madam. In future also you may come with invited by the scientific topics as you have. Thank you for joining here as a resource person, and we are very happy with this speech, scientific speech for our participants. Thank you madam. Thank you, sir. Now I will move towards the vote of thanks. Shri Kumarswami Mahavidyalaya Ausa, District Latur, have organized World Record Series 2. Today was the 102nd day for the series, and the keynote speaker, Dr. Supriya Singh Gupta madam, have expressed her views, explained the topic very nicely. The topic was very new to us. Extent of aluminum involvement in our lives and its impact. So where madam have explained all those details, the different sources of aluminiums, then aluminum distribution in the body, then alternatives for cooking vessels, then alternatives for aluminium foils, and how to avoid dry shampoos, then limit of cosmetics, and avoid the preserved food. Now these are the points covered in her lecture so nicely. So I am very thankful to you madam. I express sincere gratitude for being with us. Now I thanks to honorable principal sir, who is the chief organizer of the record series. Then I thanks all my guests sir. So thanks to you sir. And on the screen Sonu Kumar sir, especially thanks to you and all the participants, those who join the series regularly and enhance the beauty of our series. So thanks to you all. With the kind permission of the chief organizer, I declare that today's session is over. But I request, please fill up the feedback link which is given in the chat box. Thank you very much madam for paying your valuable time. Thank you very much. Thank you, madam. Shukla sir was from medical side, so he especially asked the question. Medical side, he was. Dr. Shukla. हेलो, बोलिए सोनू कुमार सर. सोनू कुमार सर बोलिए. हमारी आवाज आ रही है? अरे हाँ जी सर आ रही है, बोलिए. आज मैं खेद प्रकट करना चाहूंगा थोड़ा, क्योंकि मेरे कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हुआ है. माइक बार खुल जा रहा था मेरा. एक्चुअली हमारे तरफ नेटवर्क की समस्याएं हैं. मैम आपका जो पीपीटी है ना, वो बेदकर सर को आप भेज दीजिएगा, तो ताकि वो मुझे उसमें कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे अच्छे लगे हैं. आपने जो व्यू बताए, बहुत सारे जो सवाल थे उससे भी जवाब मिले. मेरे लिए एक नया विषय था जी, और मैं एक नया विषय को मैंने जाना है.
और सबसे बड़ी बात है, मैं एक चीज हमेशा इस बात को मैं जानता हूँ कि सारे विषय जब आपको हम उठाते हैं, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे विषय वो हमारे जीवन शैली से जुड़ा हुआ ही होता है। तो इस तरह का जो आज आपने जो कार्यक्रम अम्बेडकर सर के द्वारा जो ये प्रत्येक दिन का जो यज्ञ जो चलाया जा रहा है, उस यज्ञ में हम सभी प्रतिभागी जुड़ कर यहाँ जो बात को जानते हैं। आप जैसे मतलब क्या मैं बोलूं, आप एक सबसे बड़ी सुप्रिया मैम, आप एक यंग में हैं और उस यंग में रहते हुए इतना अच्छा से अपनी बातों को बताया। मैं आज ये सोचता हूँ कि अगर मैं भी कुछ अच्छा अपने फैकल्टी में अगर कुछ अच्छा करता हूँ, जर्नलिज्म में अच्छा करता हूँ, तो मुझे भी एक चांस, हमें भी अम्बेडकर सर यहाँ पर बोलने का भी देंगे। तो मैं आप लोग से सीखता हूँ बोलने के लिए भी। कम्युनिकेट कल एक कार्यक्रम था मेरे, शायद मेरे लिए इंफॉर्मेशन प्लस कम्युनिकेशन की बात होता था, मगर सर का जो कम्युनिकेशन स्किल्स की बात जो थी उसमें बहुत सारी बातें समझ में आई। लग रहा था कि छोटा चीज है, मगर वो छोटा नहीं था, बहुत बड़ा चीज था। मुझे जब मैम बताने लगी तो बहुत सारी बातें सामने आई। और ऐसे ही आज आपने जो बातें बताई, किस तरह से शैम्पू वगैरह का जो आपने जो बातें रखी, जो कुछ क्वेश्चन जो सामने आए, उससे भी मेरा क्लियरेंस हुआ। इसके लिए शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पटना बिहार से जुड़ा हुआ हूँ, हिंदी पत्रकारिता और जनसंचार का विद्यार्थी हूँ। आपको सोनू सर, आपका टॉपिक जब कभी आप चाहे इनवाइट हो सकते हैं, बोलिए आप भी, क्योंकि हर दिन जुड़ने वाले आप। हाँ, ये है सर प्रयास में लगा हुआ हूँ, क्योंकि अभी जो वर्तमान में पत्रकारिता की जो स्थिति है उसी पर एक मैं भी पीपीटी तैयार करने में लगा हूँ। और ये मैं बता दूं कि ये जो मैंने प्रयास किया है, आपसे जब से कोरोना काल का जो कार्यक्रम लगातार, जहाँ ऑफलाइन कार्यक्रम अब हो रहा है, वहाँ आपने ऑनलाइन कार्यक्रम को रखा है, जारी रखा है आपने। और एक मैं बात बता दूं, पहले ऑनलाइन जब कोरोना काल में हम लोग जब घर में बैठे थे, तो मैं गूगल मीट को भी नहीं जानता था, जूम को भी नहीं जानता था, मैं यूज ही नहीं किया था। जब मैं क्लास करना स्टार्ट किया, जब ऑनलाइन जब मैंने एडमिशन करवाया, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद ऑनलाइन क्लास चालू हुआ, कई सारे प्रोफेसर मिल गए, कई सारे टीचर्स मिल गए, जेएनयू के प्रोफेसर, बीएचयू के प्रोफेसर, दोस्ती होती चला गया और जानने के लिए कुछ मिला। उसके बाद आप लोग, आपका जो कार्यक्रम जब चलने लगा, तो अम्बेडकर सर मैं क्या बताऊं, उसमें पीपीटी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान देखा। मैंने देखा सारे पीपीटी को, जब मैं पीपीटी मांगता हूं तो मैं उसमें बड़ी गंभीरता से देखता हूं कैसे तैयार किया जाता है। इस पीपीटी को तैयार करने में जैसे सुप्रिया मैम कितना मेहनत किए होंगे, उसको लिखने में कहां कहां से बातों को उन्होंने जुटाया होगा। मैंने भी एक प्रयास किया है, मैं कल तक मैंने 2 पन्ना जर्नलिज्म से रिलेटेड 2 पन्ना मैंने बनाया है। जैसे ही वो मेरा पूरा होता है तो मैं अम्बेडकर सर आपसे उसके लिए मैं परमिशन चाहूंगा कि मैं भी एक प्रेजेंटेशन ये जर्नलिज्म से संबंधित मैं दे सकूं, क्योंकि वर्तमान पत्रकारिता की जो स्थिति है वो शायद बहुत हटकर है। और ये जो मैं बताऊं, ये जो यहाँ पर जो आपने कार्यक्रम जो करवा रही है, सचमुच में ये सही मायने में डिबेट है। ये इस डिबेट में फायदा है, मगर जो चैनल में बैठकर मगर 1 घंटा डिबेट को देखूंगा, वो मेरे लिए बेकार है। वो डिबेट मेरे किसी काम का नहीं है। जब अगर मैं यहाँ बैठता हूँ तो ये डिबेट मेरे काम का है, क्योंकि आपने सारे लेक्चरर लोगों को बुलाया, रिसर्च स्कॉलर्स को बुलाया, वहां पर बेहुदा एक किसी नेताओं को बैठा दिया जाता है जो जहर को उगल कर निकल जाते हैं। तो मैं उससे अच्छा मैं आपके इस चैनल को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि आपने जो चैनल को शुरुआत किया अपने कॉलेज का, कितने लोगों का काम आ चुका है। मैंने यहाँ से कई लोगों को यूट्यूब को लिंक दे दिया है, जो बेचारे उनको लगा कि इससे सुना जाए, उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया। बिहार में कई सारे टीचर्स और प्रोफेसर, इस चीज को मैंने देखा गंभीरता से प्रोफेसर ने लिया, किसी स्टूडेंट ने नहीं लिया। मैंने इस चीज को मैंने आपके लिंक को आज मैंने 10 जगह शेयर किया। मैं देख रहा हूँ कि कोई एक लड़का जुड़ नहीं पाया, अब मुझसे 2 लड़का लिंक मांग रहा था। मैं उसे अब यहाँ से जब निकलूंगा तो मैं उसे जवाब दे दूंगा कि जब लिंक मांगा जाता है तो जब जुड़ते ही नहीं तो फायदा क्या है। तो लिंक सिर्फ लेने से नहीं होगा, यहाँ जुड़ता हूँ मैं प्रत्येक दिन। कभी कभी नेटवर्क की समस्याएं होती है, मगर आपने एक अच्छा काम कर रखा है सर, यूट्यूब पर आपने अपलोड कर रखा है। ये तो इतिहास रचने वाला बात हो गई। जब यूट्यूब पर जब लोड हो जाता है तो वो इतिहास, सुप्रिया दीदी कब मिलेंगी नहीं मिलेंगी तो मैं नहीं जानता हूँ। अब मगर ये तो है ना कि जब मैं आपका चैनल को खोलूंगा तो जो उन्होंने बताया वो मेरे पास वो रिकॉर्ड है, वो मैं कभी भी सुन ले सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये इतिहास रचना ही हुआ। आज के डेट में मैं पत्रकारिता का स्टूडेंट हूँ, मैं न्यूज 24 में काम करने के लिए मैं रिज्यूम डालूं, मैं आज तक मेरे के लिए रिज्यूम में, जब मेरे पास खुद का कंटेंट होगा तो मेरे पास चैनल अपने हाथ का है, मैं जब चाहूंगा जब चालू करूंगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सोनू कुमार जी, थैंक यू मैडम। नाउ यू कैन लीव मैडम। Thank you, sir.
सर आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग Thank you, बिकॉज दीदी। कोविड आके अच्छा ही हुआ, क्योंकि नहीं तो बैठकर सर के साथ हमारा कभी मुलाकात नहीं होती थी। वो एक टाइम हाँ, था ये बात जहाँ तो पे है। हम लोग सर से जुड़े, कुछ भी हुआ That's अच्छा ही हुआ। जी, आपके जी, सबके बिल्कुल। सहयोग से इंटरेक्शन इसीलिए तो नए नए लोगों से मुलाकात भी हो जाती है। सुप्रिया दीदी आ जाए, कल भी किसी मैम को बुलाया गया, बहुत सारे सर भी यहाँ पे आए, तो अच्छा लगता है। ये होते रहना चाहिए कार्यक्रम। और सुप्रिया दीदी से एक उम्मीद और होगा कि कभी अगर और भी अगर आपका कोई विषय होगा तो आप प्लीज उसे लेकर आइएगा बेदकर सर के पास, तो ताकि हम लोग फिर आपका सुनना चाहें। तीसरा लेक्चर बिल्कुल है जी। उनका। पहला लेक्चर टॉर्टाइज डे था, जो कासव रहते ना पानी में, उनकी समस्या के ऊपर था। उनके बहुत साइंटिफिक स्टडीज टॉपिक रहते हैं, और अगली बार भी उनको आपने इनवाइट किया है, तो ऐसे टॉपिक कभी तो 5-6 महीने में एक बार ज्वाइन हो जाएंगे। उनको हम निमंत्रित करते हैं। धन्यवाद मैडम। Thank you. और जो Thank you. Madam, do you have any channels? Any channels we can view in YouTube or something else? Yours? daily Mine? daily we upload this on YouTube, madam. No, sir. Madam's personal channel is there so that we can watch such informative thing. No, sorry, I don't have. You But can it create, was very interesting. you can create channel, madam, no problem, because it's useful Yes, yes. I'm thinking about that. I'm thinking of uploading my videos which I've created for my students. Yes, because it's e-content which is useful for our API, personal career, academic career, all these things are useful one. You can upload. Okay, thank you. Sure, sir. Best Thank wishes you. for your next planning. Thank you, madam. Yeah, thank you, sir.